So today we are going to start a new topic. Today we are going to start a new topic, and the name of topic is partnership. And the name of topic is partnership. The name of topic is partnership. To solve the questions related to the partnership, if you want to solve the question related to the partnership, first you have to be clear in the concept of ratio and proportion. First you have to be clear with the concept of ratio and proportion. Partnership. First let me explain partnership. There are basically two types of partnership. First one is first one is simple partnership, and second one is compound partnership. Compound partnership. What happen actually? Sometimes only one person run a business, but sometimes two, three partners they jointly रन अ बिजनेस. ठीक है बेटा. कई बार क्या होता है, एक सिंगल बंदा बिजनेस को रन करता है, कई बार बेटा एक से ज्यादा बंदे बिजनेस को रन करते हैं. मीन्स वो बिजनेस को चलाते हैं और किसमें बेटा वो एक पार्टनरशिप में बिजनेस को रन करते हैं. ठीक है बेटा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट वन इज सिंपल पार्टनरशिप. द मीनिंग ऑफ सिंपल पार्टनरशिप मीन्स when 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 all the persons when all the person invested when all the persons invested different amount for same time, different amount for same time, for same time. और दूसरा डेफिनेशन इसका क्या है? और दूसरा डेफिनेशन क्या है बेटा सिंपल पार्टनरशिप का ही? when all the persons involved in the business invested same amount for different time, same amount for different time. Means sometimes he will say same amount but time duration is different. Sometimes he will say duration is same but amount invested is different. So such type of partnership is known as simple. Such type of partnership is known as simple partnership. Known as simple partnership. Now, what happen in compound partnership? Compound partnership means a different amount for different time. Different amount for different time means अगर बिजनेसमैन में पार्टनर्स डिफरेंट टाइम में डिफरेंट अमाउंट वो बेटा इन्वेस्ट करेंगे तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज कंपाउंड पार्टनरशिप. दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज कंपाउंड पार्टनरशिप. आर यू क्लियर विद दीज टू टर्म्स? आर यू क्लियर विद दीज टू टर्म्स? Okay.
Now, going forward in this topic, we have to understand three things. We have to understand three things. Beta, if you are going to run any types of business, if you are going to run any kind of business or any type of business, first you have to make some investment. Then you have to make some investment in the business. Somewhere it is written as investment, or somewhere it will written as capital, or somewhere it will written as amount, or somewhere it will written as rupees or money invested. सेकंड, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो बेटा, आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे किसी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए. सेकंड थिंग इज टाइम ड्यूरेशन. Second thing is time duration. Time duration, it can be in the term of years, months, months और days. टाइम आपका ईयर के टर्म में भी हो सकता है, मंथ के टर्म में भी हो सकता है और बेटा डेज के टर्म में भी हो सकता है. आफ्टर दैट आप बिजनेस करते हो किस बात के लिए बेटा? आप कुछ प्रॉफिट अर्न करोगे. क्या करोगे बेटा? सम यू विल अर्न सम प्रॉफिट. यू विल अर्न सम प्रॉफिट. ठीक है बेटा, एक बिजनेस कर रहे हो आप, उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, और फिर आपको बिजनेस में क्या होगा बेटा? प्रॉफिट होगा. बिजनेस में क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट होगा. तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस, one thing you have to remember, the profit is nothing but it is the product of C into T. Profit is nothing but profit is equals to the C into T, where T is nothing but it is the time duration. T is nothing but it is the time duration. C is nothing but it is the capital or amount invested in business. P is nothing but P is the profit. P is the profit earned in the business. P is the profit earned in the business. Now, first thing, P equals to nothing but C into T, or we can say that profit will be directly proportional to the capital or directly proportional to the time. Directly proportional to the time, or we can say that if profit is constant, if profit is constant, then capital will be inversely proportional to the time. Capital is nothing but it is the inversely proportional to the time. Inversely proportional to the time. Suppose two persons are investing in a business. Two persons are investing in a business with rupees 12,000 and 18,000 rupees. 18,000 rupees. At the end of 1 year, at the end of a year, at the end of the year, or at the end of a year, what is the ratio between profit earned by these two? What is the ratio between profit earned by these two? What is the ratio between
profit earned by these two. So we know very well here time duration is constant, then profit will be directly proportional to the sum invested, means P1 upon P2 equals to capital 1 upon capital 2. Investment of first person is 12,000, investment of second person is 18,000. So their profit will come out to be in ratio 2 is to 3. Their profit ratio is nothing but 2 is to 3. Are you clear with this concept? Are you clear? So students, this is the basic background behind the questions related to the partnership. Related to the partnership. In a partnership, two or more than two or more person can be in a partnership. So before solving the problems related to the partnership, let me tell you one more thing from the topic ratio and proportion. From the topic ratio and proportion. Ratio and proportion. Suppose if the ratio between the sum invested of A and B, if the ratio of sum invested of A and B in a business is 5 is to 4, and the ratio of sum invested in a business of B to C is 6 is to 7, 6 is to 7, then what is the ratio of sum invested between A and C? Then what is the ratio of sum invested between A and C? So beta, to calculate the ratio of A to C, I am going to explain three methods. I am going to explain three methods. Other than your method, I am going to explain three methods. If you will target by your method, if you will calculate the relationship between by apna method, so what you will do, first you will put A ratio B equals to 5 by 4 or B equals to nothing but 4A by 5. After that, you will do B is to C equals to 6 by 7 or B equals to 6C by 7. Then you will equate these two, means 4A upon 5 equals to 6C upon 7 or A upon C equals to 6 into 5 upon 7 into 4. क्यों बेटा 7 into 4. Then you will get 35 upon, sorry, then you will get 30 upon 28, or the ratio between A is to C is nothing but 15 is to 14. 15 is to 14. Definitely ratio will come out beta. Definitely ratio तो आ जाएगा, but this is a time taking procedure. This is a time taking procedure. This is a time taking procedure. So how to calculate this? I am going to explain with the help of method 1. What is method 1? What ratio is in between A and B? A and B ratio is 5 ratio 4, 5 ratio 4, and ratio between B is to C, ratio between B is to C is 6 is to 7, 6 is to 7. So what is your first target? देखो B is throughout common here, B को इक्वल कर लेते हैं बेटा. यहाँ पर B का वैल्यू, the V magnitude here is 4 unit and in this ratio magnitude of B is 6 unit. Make it common, multiply it by 3, multiply it by 2.
तो दिस विल कम आउट टू बी 15 is to 12 or 12 is to 14. दिस इज नथिंग बट ए इज टू बी इज टू सी। यहाँ पर बेटा ए बी सी बी का वैल्यू इक्वल हो गया है, तो द रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी विल कम आउट टू बी 15 is to 12 is to 14, or the ratio between A and C is nothing but this is equals to 15 is to 14. 15 is to 14. Are you clear? Are you clear with this? Multiple times I have explained it. Now, second method, method 2 is nothing but first you will write the ratio between A is to B. A is to B is 5:4, 5:4, and B ratio C is 6 is to 7, 6 is to 7. बेटा अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इफ आई एम लुकिंग एट माई रेशियो, यहाँ पर एक सीट वैकेंट है और एक सीट बेटा यहाँ पर वैकेंट है, मीन्स आई हैव टू पुट 2 वैल्यूज। तो बेटा क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर 4 से एंड हो रहा था बेटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ पर बेटा 6 से स्टार्टिंग हो रही थी, तो यहाँ पर बेटा हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। व्हाट वी विल राइट 6, मीन्स जिस टर्म से लास्ट हो रहा है वो लिखेंगे, जिससे स्टार्टिंग हो रही है वो लिखेंगे बेटा। तो व्हाट दिस इज नथिंग। तो हम बेटा क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, we will multiply this, तो this will come out to be a ratio b ratio c। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 into 6 कितना होगा बेटा, 30, 4 into 6 कितना होगा बेटा, 24, 4 into 7 कितना होगा बेटा, 28। if I am going to divide it by 2, the ratio will come out to be 15 is to 12 is to 14. The ratio will come out to be 15 is to 12 is to 14. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Okay. Is this clear to everyone? Okay. Now, method 3, or this method will tell same thing. If A ratio B is 5:4 and B ratio C is 6:7, बेटा हमको लिखना है A ratio B ratio C। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 5 into 6 करूंगा बेटा, कितना आएगा, 30 आएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 into 6 कितना होगा बेटा, 24। फिर बेटे मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा, 28। 2 से डिवाइड करूंगा बेटा, तो दिस रेशियो विल कम आउट टू बी 15 is to 12 is to 14. This ratio will come out to be 15 is to 12 is to 14. Is this clear to everyone? Okay. So beta, this was the concept to convert ratio. Suppose in some question he will say like this, 2a equals to 3b equals to 7c. Then what is the ratio between a is to b is to c? बहुत सिंपल मेथड में बता रहा हूं बेटा। या तो एक तरीका है कि तीनों में जो टर्म आ रही है उसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम नहीं लेना है तो बहुत सिंपल देते हैं। पहले देखो बेटा, सपोज करो ए का रेशियो लिखना है। इफ आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ ए, तो बेटा आई विल हाइड दिस, मैं 2a को हाइड कर दूंगा बेटा। क्या करूंगा मैं, 2a को हाइड करूंगा
और 3B और 7C आ रहा है, तो 3 और 7 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 और 7 मल्टीप्लाई विल कम आउट टू बी 21। ओके, अब बेटा सपोज करो मुझे b का वैल्यू लिखना है, तो मैं 3b को हाइड कर दूंगा, क्या बाकी रहेगा मेरे पास 2 और 7, 2 और 7 का प्रोडक्ट कितना होता है बेटा 14 होता है। अब बेटा मेरे को c के लिए लिखना है, तो मैं 7c को हाइड कर दूंगा, 7c को हाइड कर दूंगा, फिर 2 और 3 का प्रोडक्ट करूंगा, तो दिस विल कम आउट टू बी 6, दिस विल कम आउट टू बी 6। तो ऐसे बेटा मैं ये रेशियो कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। अगर ये नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, 2a 3b 7c, इन सब का एलसीएम क्या ले लेंगे 46, सॉरी 42 एलसीएम आ जाएगा, 42 एलसीएम आएगा, तो वही 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 6 आएगा। तो बच्चों ये रेशियो आ गया है, क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट दिस इज द रेशियो बिटवीन a is to b is to c। is this clear to everyone? Is this clear to everyone beta? Now I am going to show some questions related to the partnership, some questions related to the partnership. See question number 1, see question number 1, is this visible to everyone? What he is saying, A and B started a business investing amount of 92,500 and 1,12,500 respectively. If B share in the profit is 9,000, then what is the profit? What is the profit earned by A? What is the profit earned by A? What is the profit earned by A? देखो बेटा, earned by A, टाइम का जिक्र नहीं किया है, टाइम का जिक्र नहीं किया है, इट मीन्स टाइम इज कांस्टेंट, इट मीन्स टाइम इज कांस्टेंट। if time is constant then profit ratio will directly proportional to the capital or sum invested. Profit ratio is nothing but directly equal to the time invested, means profit of person A to the profit of person B equals to capital of person 1 to the capital of person 2. What has given, what capital value is given, 1,500, 1,12,500, 92,500 and 1,12,500. The profit earned by person 1, profit earned by, देखो B's profit is given, asking for A means P2 is given to us, P2 is given to us, asking for P1, P2 is 900. If you will solve it, after solving it you will get, after solving it you will get rupees 7,400, you will get rupees 7,400 as the answer. Means profit earned by second person, sorry, profit earned by first person, profit earned by first person is 7,400, 7,400. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? But beta, सर P2 let, 9,000 है, हाँ P2 9,000 है, sorry 92,500, 1,12,500. B's profit is given to us 9,000, asking for A's profit. A's profit will come out to be, A profit is come out to be 7,400. बेटा एक मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ ट्रिक। बेटा एक बात देखो, प्रॉफिट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, कैपिटल के। मींस अगर कोई बंदा एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ कैपिटल विल, as long as the capital value of sum invested by the person, or I can say that as long as the capital value will increase, the profit earned by the partner will also increase. अगर कोई बंदा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। अब एक बात सुनो बेटा, आप अगर क्वेश्चन में देख रहे हैं तो ए जो इन्वेस्ट कर रहा है
वो 92,500 इन्वेस्ट कर रहा है और बी जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 1,12,500 इन्वेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि बी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 9,000 हो रहा है, क्योंकि बी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। आपसे पूछा ए का प्रॉफिट, ऑब्वियस सी बात है बेटे, ए कम पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो ए को प्रॉफिट भी कम होगा। किससे कम होगा, बी से। बी का वैल्यू क्वेश्चन में 9,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है ए का प्रॉफिट 9,000 से कम ही होगा। इफ आई एम गोइंग टू सी ऑल माई 4 ऑप्शंस, if I am going to see all my 4 options, I am having only option A, sorry, I am having only option C with value less than 9,000। तो डायरेक्टली मैं देख के भी बता सकता था कि A को कितना प्रॉफिट अर्न होगा बेटा, 7,400। Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Now see question number 2. See question number 2. What he is saying, A, B and C start a business. Why investing 13750, 16250 and 18750 respectively. If we share in the profit received by them is 5,200, find the total profit of all three. B's profit is given to us, asking for the sum of the profit earned by all these three members. Again टाइम का जिक्र नहीं किया है तो we can say that amount invested for the equal time. Amount is invested for the equal time. What is saying? ABC 13750, 16250, 16250 and 18750. Simply capital का रेशियो में simply what I will write the ratio of profit, means सेम टाइम की बात हो रही है तो जो कैपिटल का वैल्यू वही बेटे किसका वैल्यू होगा, प्रॉफिट का वैल्यू होगा। आई एम गोइंग टू राइट प्रॉफिट रेशियो डायरेक्टली। प्रॉफिट रेशियो डायरेक्टली, व्हाट इज प्रॉफिट रेशियो? देखो बेटा, इफ यू विल सी 0 0 विल कैंसिल आउट, 0 0 विल कैंसिल आउट। आप बेटे 0 0 विल कैंसिल आउट, 1375 if you will divide it by 25, देखो फर्स्ट बेटा आप डायरेक्टली लिखो कितना है 13750, जिस रेशियो में प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। बेटा यहाँ P इज नॉट प्रिंसिपल हियर, P इज प्रॉफिट हियर, P इज प्रॉफिट हियर। 13750, 16250, 16250 and sum invested by third person is 18750, 18750। first what I will do, I will cancel out 0 0। पहले मैं 0 0 को कैंसिल करूंगा और जैसे 0 कैंसिल हो गया, अब मेरे को दिख रहा है बेटा सबका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 25 से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा मैं? I will divide it by 25, I will divide it by 25। ठीक है बेटा, 25 से मैं डिवाइड करूंगा तो बेटे 25 से मैं डिवाइड करूंगा तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 55 is to 65 is to 75। ओके, मींस जो आपके तीनों पर्सन है ना बेटा A B C, तो उनको प्रॉफिट किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में मिलेगा? 55 65 75। 5 से और डिवाइड कर सकते हैं टू मेक आवर कैलकुलेशन इजियर। दिस इज 11 13 एंड 15। बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट ही हैज गिवन टू अस, B share in the profit received by them is 5200, means 13 यूनिट का वैल्यू दिया है बेटा 5200, it means 1 unit value is how much, 400।
कितना है बेटा 400। पूछ रहा है व्हाट इज द कंबाइंड प्रॉफिट। कंबाइंड प्रॉफिट मींस 24 प्लस 15 39, 39 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है बेटा। 39 इंटू 400, बेटा 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, फिर 4 का 9 से मल्टीप्लाई होगा। 2 जीरो के बाद यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, 2 जीरो के बाद यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। मेरे पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 2 जीरो के बाद यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो यहाँ पर बेटा मैं सॉल्व करूंगा। 39 इंटू 4, 4 इंटू 9 36, और 4 इंटू 3 120, 120 प्लस 36 156. So what will be your correct answer? Your correct answer will be nothing but 15600. 15600. Are you clear? Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Okay. Now we are going to solve one more question. We are going to solve one more question. Solve question number 4. Solve question number 4. Question number 4. Three partners shared the profit in a business in the ratio. Three partners shared the profit in a business in the ratio 8 is to 7 is to 5. Okay. They invested their capital for 7 months, 8 months, and 14 months respectively. They have invested their capitals for 7 months, 8 months, and 14 months respectively. Then what was the ratio of their capital? Beta, in this question, profit ratio is given to us, as well as time duration is given to us, asking for the capital. Beta, we know very well profit is equals to कैपिटल इंटू टाइम। मीन्स अगर कैपिटल पूछ रहा है तो प्रॉफिट रेशियो को मुझे किससे डिवाइड करना होगा? द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट रेशियो आई हैव टू डिवाइड बाय टाइम रेशियो। द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट रेशियो आई हैव टू डिवाइड बाय कैपिटल रेशियो। आई हैव टू डिवाइड बाय कैपिटल रेशियो। लेट मी एक्सप्लेन इट, let me solve it. Beta, we know very well profit is nothing but this is C by D. If I am going to calculate C, what I will do, I will divide profit by time duration. Beta, what is profit ratio? What is profit ratio? Profit ratio is 875. Profit ratio is 8 is to 7 is to 5. And what is time ratio? Time बेटा ये months के term में given है बेटा. This is 7 8 14. 7 8 14. बेटा, what is my main target? My main target is to calculate capital ratio. Means मेरे को divide करना होगा बेटा. अब देखो divide कर दें तो क्या करेंगे बेटा? Divide करने के लिए ना मेरे को क्या करना होगा बेटा? मेरे को क्या करना होगा? देखो ये जो नीचे वाला टर्म होता है ना, नीचे वाला रेशियो 7 8 14, हम ऐसा कर लेते हैं 7 8 14 का कोई एलसीएम होगा, और वो एलसीएम कितना होगा? 112। इनका एलसीएम हम 112 ले लेते हैं बेटा। 112 देखो इन तीनों का एलसीएम कितना होता है? 112 होता है। 112 तो बेटा इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो तो क्या आएगा? 8 इंटू 712 से कितना 16 टाइम्स, तो 8 इंटू 16 इज टू 8 14 इंटू 7 14 इंटू 7 और 5 इंटू 8 5 इंटू 8। ठीक है बेटा, कॉमन क्या क्या आ सकता है? कॉमन बेटा 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो बेटा ये 4 रहेगा। 2 से कैंसिल करूंगा ये 7 रहेगा। 2 से कैंसिल करूंगा तो ये 4 आएगा। तो बेटा इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो दिस विल कम आउट टू बी 4 इंटू 16 64, 7 into 7 49, 5 into 4 how much? 20. So the capital ratio
the capital ratio will come out to be 64 into 49 into 20. 64 into 49 into 20. So what will be your correct option? What will be your correct option? What will be your correct option, beta? Option D is our correct option. On the same pattern, on the same pattern, we are having one more problem, problem number 5. On the same pattern, we are having one more question, question number 5. We are having one more question, question number 5. Take your time and solve it. Take your time and solve it. Question number 5. Question number 5. Take your time and solve it.